we are popularizing the subject to every corner of Kashmir. Our future plan is to conduct these programs in Kulgam. On 16th of November, we have another program in Kulgam. Then we are landing towards Kupwara in north part of the Kashmir. And finally, we have Math Fest in University of Kashmir on 23rd, 24th of December. Math मजदार शरत वस्ताद समझित करुण मा छी गोट याद ये गोट याद करुण वन मशरई तो बेने भाई सही मैथ कर तो Only teachers can play the roles at this time because बच्चे में कोई कसूर नहीं है. Every student is intelligent. हर कोई बच्चा काबिल है. टीचर fully trained होना चाहिए. टीचर fully maths knowing होना चाहिए. तो मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा फोकस हमें प्राइमरी और मिडिल लेवल पे ही करना चाहिए कि जहाँ से हमें कंसेप्ट्स पे ज़्यादा जोर देना चाहिए इन एडिशन टू एक्सरसाइज. सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स होने चाहिए. जैसा कि आपके 8th क्लास में 7th क्लास में कोई हिस्ट्री MA हिस्ट्री वाला या कोई जोलॉजी वाला आपका मैथमेटिक्स पढ़ाता है तो वो उस हिसाब से नहीं पढ़ाएगा जैसा कि मैथमेटिक्स MSc मैथमेटिक्स वाला वहाँ पढ़ाएगा. ठीक है, आपका प्रोग्राम है और हमने सीखा मैथ कितना ज़रूरी है हमारे लिए और बहुत मज़ा आया. मज़ा आया आज और ये हमें पता चला कि मैथ कितना ज़रूरी है हमारे लिए और सबके लिए. मैथ इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. आज यहाँ पे हमने बहुत एंजॉय किया. मैथमेटिक्स का प्रोग्राम था आज, बहुत मज़ा आया यहाँ पे. हम यहाँ पर इसलिए आए कि ये जाने के लिए मैथमेटिक्स कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. आज डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाइट भीरवा बडगाम में एक मैथमेटिक्स आउटरीच कम अवेयरनेस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया. ये प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर श्रीनगर, J&K साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन काउंसिल, कश्मीर मैथमेटिकल सोसाइटी, SCERT J&K और डाइट भीरवा बडगाम के बाहिमी इश्तराक से मुनक्कद किया गया. इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि बच्चों में जो मैथमेटिक्स का खौफ है उसको दूर किया जाए और मैथमेटिक्स के डिफरेंट एवेन्यूज के बारे में बच्चों को आगाह किया जाए. इस आउटरीच प्रोग्राम का मकसद ये था कि बच्चों को मैथमेटिक्स की तरफ राग़िब किया जाए. इस मौके पर डीन एकेडमिक अफेयर्स यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर हजरत बल श्रीनगर प्रोफेसर डॉक्टर शरीफुद्दीन पीरज़ादा भी मौजूद थे. उन्होंने अपने खिताब में यूं फरमाया, मैथमेटिक्स जरा सोच लो, अगर आप ये मैथमेटिक्स निकाल देंगे, क्या हमारा एल्गोरिथम बनेगा, क्या हमारा प्रोग्रामिंग बनेगा, तो कोई चीज मुमकिन नहीं. अभी रिसेंटली कुछ साल पहले आपने सुना होगा एक टेलीस्कोप डाला गया स्पेस में जेम्स वेब के नाम से, जिसने एक रिवॉल्यूशन लाया स्पेस की टेक्नोलॉजी में. स्पेस में क्या होता है, पहले तो ये अंदाजा ही नहीं कर सकते हम कि ये टेलीस्कोप कितना दूर हमसे है, कितने लाइट ईयर्स दूर है. सो हमारा जहन बिल्कुल काम नहीं करेगा वो सुन के. और फिर वहां पे रह के वो जेम्स वेब कितनी पिक्चर्स हमको भेजता है. अंदाजा कर लीजिए ये कैसे मुमकिन है. अब बात कही जाती है भाई एक ही यूनिवर्स नहीं है, पैरेलल यूनिवर्सेस है. तो कौन सी चीज हमें ये कहती है, कौन सी चीज हमें पिक्चर भेजती है, कौन सी चीज ये कहती है कि हमारे पास पैरेलल यूनिवर्स. जैसे प्रोग्राम by its title, it's awareness of mathematics and reachability to different places. हुआ यूं है कि आज की तारीख में कोई भी सब्जेक्ट आइसोलेशन में काम नहीं करता है. माहौल इंटरडिसिप्लिनरी का है, मल्टीडिसिप्लिनरी का है. जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मैं जबरदस्त मैथमेटिक्स करता हूं लेकिन मेरी साइंस ठीक नहीं है तो मेरा मैथमेटिक्स आगे कैसे चलेगा. इस प्रोग्राम में जिला बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए सैकड़ों स्कूली बच्चों ने शिरकत की. इसके अलावा इस प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट बडगाम के मुख्तलिफ मैथमेटिक्स टीचर्स ने इस प्रोग्राम में शिरकत की. लेकिन साइकोलॉजिकली मेरा जहन फिट नहीं है तो मैं आगे कैसे चलूंगा. विच मीन्स इन अदर वर्ड्स कोई भी काम करने के लिए आज की तारीख में हर एक सब्जेक्ट को आगे लाना जरूरी है. अब लेवल्स होते हैं, जैसे किसी सब्जेक्ट की लेवल ज्यादा है, किसी सब्जेक्ट की लेवल कम है. और यहां पे आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि
कुछ इस सब्जेक्ट मौके पर हेड डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर श्रीनगर प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद खांडे ने अपने ख्यालात का इजहार यूं किया। Today at DITE Birwa Badgam, we have conducted second phase of awareness cum outreach program on popularization of mathematics for secondary school students. As Kashmir is witnessing enrollment of students towards mathematics is, I should say, rapidly declining. Keeping this in mind, from the university side, from the Kashmir Mathematical Society and Science and Technology, join hands together to have some awareness programs at different district headquarters with an intention to aware students the importance of mathematics, the career options, future of mathematics, application of mathematics. At least mathematics is the subject which helps us not only to go for higher studies, but it also helps us to understand the dynamism, the applications, to explore the simplicity of complex problems using mathematical tools and techniques. With this aim and objective, what we are trying to do, we are popularizing the subject to every corner of Kashmir so that students can make options in mathematics so that their future can be bright, and so that at least they can realize the application of mathematics in technology and other disciplines of life. Sir, you have taken the initiative of popularizing mathematics. You have been working on this project for so many years. What is your ultimate goal? Ultimate goal is we have three types of challenges. First of all, I should admit that from the government sector or from the policy makers, it is important to recruit specialized teachers at higher secondary schools and school education, particularly because there are n number of schools where teachers which don't have any background of mathematics are teaching these subjects. They can teach only exercises. They cannot be able to teach the real essence of mathematics, because mathematics itself is a language in which students should realize why we are learning this subject. So our ultimate goal, as per your question, is just apprise teachers, community, civil society and government to take care of the subject and highlight the importance of the subject with an aim to improve the human resource, manpower, so that this subject can flourish in a way it should have been. Sir, you have conducted such type of programs in Bandipora district. Now today it was conducted in DITE Badgam, district Badgam. Now what are the future plans regarding this program from University of Kashmir Mathematical Society and other stakeholders? Our future plan is to conduct these programs in Kulgam. On 16th of November, we have another program in Kulgam. Then we are landing towards Kupwara in north part of the Kashmir. And finally, we have Math Fest at University of Kashmir on 23rd, 24th of December, wherein we are just disseminating this type of information to the students of Srinagar district and Gandarbal district. Even students from all across the Kashmir can join us for that program. The activities which we are going to conduct in Math Fest are, it will be for research scholars, paper presentations, it will be interaction among the students, outreach activity for Gandarbal and Srinagar districts as I mentioned. There will be Ramanujan Day of Mathematics, as we are saying, National Day of Mathematics, in which contributions for the inspiration of our young students, what kind of contribution is being done by Srinivasa Ramanujan, a great Indian mathematician. And further we have the alumni meet. All the pass out students of the department can join and they can suggest the feedback how we can make ourselves available for the larger aspect of this community so that this subject can flourish. Sir, you are striving very hard for the popularization of mathematics. What do you expect from other stakeholders like government of Union Territory and other stakeholders who are directly or indirectly involved with the education, particularly the mathematics education? So from the university side, we cannot regularly make frequent visits to all district headquarters. So what we are doing, we are trying to at least apprise and aware the teachers of the different districts, the stakeholders, the parents, and all those who are one way or in the other way associated with the teacher and student community. At least they can disseminate the same information to the grassroots level. For the government, we just request that try to have a look
towards all developed countries. What they are doing, they had kept mathematics compulsory for all students because this gives a foundation for the logic, understanding, and to be a good entrepreneur or to be a good ambassador for the community. We can be a good economist, we can be a good technologist if we produce a good mathematician. I want to add one more thing here. This program was not possible unless we had a coordination from SCERT Kashmir. We have a coordination from DIET Birwa. So I am very much thankful to both organizations. I am thankful to JKSCIT, STIC, Science Technology Innovation Council, and also Kashmir Math Society. So they helped us. इस प्रोग्राम के बारे में GM डार ने अपने ख्यालात का इजहार यूं किया। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है और हम आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माय फीलिंग्स रिगार्डिंग दिस प्रोग्राम, क्योंकि हम पहले से ही चाहते हैं कि हमारे जो एपेक्स इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कश्मीर यूनिवर्सिटी से आज जो टीम आई थी अंडर दिस हेड ऑफ द मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट एंड डीन हेड जो यहाँ पे आए थे, उनकी इस सरबराही में जो आज का ये प्रोग्राम हुआ, इतना खूबसूरत प्रोग्राम रहा, इतना खूबसूरत प्रोग्राम रहा। आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माय फीलिंग्स लाइक रिगार्डिंग दिस प्रोग्राम, क्योंकि जो हमारे डाइट की तरफ से हर जून से 10-10 बच्चों को यहाँ पे लाया गया, वो बच्चे सुबह 10 बजे बैठे थे और उठने का नाम नहीं ले रहे थे। उतना मज़ा उनको आया और वो चाहते थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस मैथमेटिक्स के बारे में जानकारी हासिल करें। और जो यहाँ पे स्पीकर्स थे यूनिवर्सिटी से आए हुए, SCERT से आए हुए, जैसे हमारे गुलजार साहब थे या प्रोफेसर खाने साहब थे, हेड ऑफ द मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, उन्होंने किस तरह से उन बच्चों को मोटिवेट किया। मुझे लग रहा कि जो बच्चे आज यहाँ आए थे वो मैथमेटिक्स फोबिया जो है आज के इस दौर में हमारी सोसाइटी में, हमारे बच्चों में, वो बहुत हद तक दूर हुआ है। तो मैंने जब देखा, मैंने यही पाया, फर्स्ट ऑफ ऑल आई GM डार एज मैथमेटिक्स टीचर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट, क्योंकि जिस तरह से मुझे पढ़ाना चाहिए था उस तरीके से मैं नहीं पढ़ाता था। कैसे पढ़ाना चाहिए? हाँ, हम मैथ पढ़ाते थे, मैथ कराना है और एक्टिविटी बेस्ड। और मुझे उस वक्त खुद भी पता नहीं था, जब मेरे ऊपर भी उन्होंने ये बोझ डाला। और अब आजकल हम एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाते हैं और बच्चों को थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज़, थ्रू लॉजिक समझाते हैं, तभी तो आज हमें लग रहा है उसका बहुत असर हमारे स्कूलों में देखने को मिल रहा है। प्ले वे मेथड्स, एक्टिविटी बेस्ड मेथड्स, तभी तो मैंने कहा कि मैथ मज़ेदार, शरत वस्ताद, समझित करुन मा छी गोट याद, ये गोट याद करुन वन मशरे तो बेनी भाई सरी मैथ पर। तो आज का जो ये प्रोग्राम है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मुनक्किद किया गया। हम चाहते हैं कि स्कूल लेवल पे, जोनल लेवल पे ऐसे प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाए, ताकि जो हमारे बच्चे हैं, जो बेचारे बेखबर हैं, जिनको ये मालूम नहीं है इस मैथमेटिक्स का स्कोप क्या है और मैथमेटिक्स की इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि मैथ हर एक सब्जेक्ट में है, हमारे घर में भी है, घर से बाहर, ज़मींदार हो, कोई भी हो, तो मैथ की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा, मैथ रुस पारुंची बेसुर सोज, अगर सोज में सुर नहीं है वो दैट इज नॉइस। वादी कश्मीर के मारूफ मैथमेटिक्स एक्सपर्ट जनाब अरशद हसन वानी ने अपने ख्यालात का इजहार यूं किया। बडगाम में, बीरू में, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोग्राम एंड मैं शोपियान से इसी घर से आया हूँ, क्योंकि ये प्रोग्राम पिछले 2 साल से चल रहा है अंडर द गाइडेंस ऑफ मिस्टर खांडे साहब। खांडे साहब ने ही, अगर हम सच मानों में कहेंगे, खांडे साहब ने ही इस सब्जेक्ट में जान डाल दी, क्योंकि जब से उसने इसमें ये पहल की कि हम इस सब्जेक्ट के बारे में हम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे, ताकि ये सब्जेक्ट पॉपुलर और हो जाए, क्योंकि उसको इस बात का बिल्कुल ख्याल था कि ये सब्जेक्ट डिक्लाइन हो रहा है। और हमें भी बहुत ही हम भी कंसर्नड थे बीइंग मैथमेटिक्स टीचर्स कि ये सब्जेक्ट डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, लेकिन मुख्तार साहब ने बहुत ही अच्छी कोशिश की और ये जो प्रोग्राम्स हर डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहे हैं, इन्हीं के बदौलत अब बच्चे मैथ्स बच्चों ने अब लेना शुरू किया है, बच्चे मैथ्स ले रहे हैं। और आज के लेक्चर में मैंने ये पर्टिकुलरली बोला है कि मैथमेटिक्स
ٹیچر جو ہے وہ اس اسٹائل سے سیکنڈری لیول یا پرائمری لیول تک وہ ایسا ٹیچر ہونا چاہیے کہ وہ پلے وے میتھڈس ان کے پاس ہونے چاہیے, ایکٹیویٹی بیسڈ طریقہ ہونا چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹس موٹیویٹ ہو جائیں, اسٹوڈنٹس انجوائے کریں اس سبجیکٹ کو پڑھنے میں. What do you think are the reasons behind this mathematics phobia? Why students try to escape from mathematics? Why they are afraid of mathematics? سر اٹس مائی پرسنل ایکسپیرئنس. سر اگر میں آپ سے بولوں سر, بفور سم 20 years جب ہم پڑھ رہے تھے ان دنوں جو ٹیچرس سر تھے, آئی تھنک ایٹ ایلیمنٹری لیول, ایٹ پرائمری لیول, ایٹ پری پرائمری لیول, دے ور مور ٹیکنگ انٹرسٹ. جم نہیں پاتے اس کے مائنڈ میں کہ میں کس ٹیکنیک سے, میں کس طریقے سے اس میتھ پرابلم کو سالو کروں. How teachers can play the role for this popularization of mathematics? Only teachers can play the roles at this time because بچے میں کوئی قصور نہیں ہے. Every student is intelligent. ہر کوئی بچہ قابل ہے. ٹیچر فلی ٹرینڈ ہونا چاہیے, ٹیچر فلی میتھس نوئنگ ہونا چاہیے, ٹیچرس میں ایبلٹی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ ایکٹیویٹی بیسڈ طریقے سے میتھس پڑھائیں, وہ ریئل ورلڈ سے میتھمیٹکس کی پرابلمس کو کمپیئر کریں اور وہ سبجیکٹ کو انجوائبل بنائے, اور ٹیچر کو اس طریقے سے پڑھانا چاہیے تاکہ اس کو اس سبجیکٹ کا فیل آ جائے. You came all the way from Shopian district to Badgam for the popularization of mathematics. What was in your mind in the morning? سر ایکچولی مجھے بھوک تھی, مجھے وہی بھوک آج سے 30 سال پہلے بھی جو بھوک مجھے میتھس پڑھنے کی تھی, یو ول ناٹ بلیو, مجھے آج بھی ہے. میں آج بھی اسی طریقے سے میتھ پڑھتا ہوں جس طریقے سے میں آج سے 20 سال پہلے پڑھتا تھا. اور وہی جب میں کلاس میں اپنی ایکسپیرینس آپ کو بولوں, جب میں کلاس میں جاتا ہوں ہمیشہ بالکل یہی دماغ میں جو ہوتا ہے کہ آج مجھے بچے سے بھی کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے, اور جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ میں بچے کو دوں. وہ مطلب ایک انٹرسٹ کے ساتھ, ایک محبت کے ساتھ, میرے پڑھانے میں شفقت, محبت. میتھمیٹکس ایکسپرٹ اعجاز احمد ڈار صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار یوں کیا. آج کا جو یہ پروگرام رہا پاپولرائزیشن آف میتھمیٹکس کا, بہت ہی ایک اچھا انٹرسٹنگ پروگرام تھا. یہاں پہ صبح سے لے کر 3 بجے تک جو بچے تھے بہت ہی انتھوزیاسٹک تھے اس پروگرام کے متعلق. اور کشمیر میتھمیٹیکل سوسائٹی اور یونیورسٹی آف کشمیر سے جو ہمیں گیسٹ آئے تھے, اور SCRT اور ڈائٹ کے جو یہاں پہ ایڈمنسٹریٹیو آفیسرز تھے, انہوں نے اس کو کنڈکٹ کیا تھا. تو ایک نائس انیشیٹو تھا. جو ڈکلائن آف میتھمیٹکس ہے کیوں ہو رہا ہے اور اس کا فوبیا کیوں ہے اتنا زیادہ, تو اس سلسلے میں یہ پروگرام تھا. تو مجھے لگ رہا ہے کہ آج جتنے بچوں نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا, مجھے لگ رہا ہے کہ ان سب میں جو یہ میتھمیٹکس فوبیا وہ دور ہوا ہوگا, اور ان کو لگا ہوگا کہ یہ کتنا ایک انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے. اور مور اوور اس میں جو اپرچونیٹیز ہے, جاب اپرچونیٹیز ہے, اور ہائر لیول پہ پڑھنے کی یا باقی سبجیکٹس جو ہے وہ اس کے ساتھ کیسے کمیونیکیٹ ہو رہے ہیں, میتھمیٹکس کے بغیر جو باقی فزیکل سائنسز ہے وہ کیسے انکمپلیٹ ہے, آج بچوں نے یہ سب کچھ سیکھ لیا. تو مجھے لگ رہا ہے کہ ایسے انیشیٹیوز جو ہے کشمیر میتھمیٹیکل سوسائٹی کو اور بھی اس ڈسٹرکٹ میں کرنے چاہیے. As a mathematics expert, what do you think are the reasons behind this mathematics phobia? Why students are trying to escape from mathematics? Why they are afraid of mathematics? As because you have been associated with mathematics teaching, what do you think are the basic reasons behind this? اصل میں مجھے جو لگ رہا ہے کہ اسٹوڈنٹس آر ناٹ افریڈ آف میتھمیٹکس. ایکچولی ریزنز یہ ہے کہ ہمارے جو پرائمری لیول پہ اور مڈل لیول پہ جو ہے میتھمیٹکس ٹیچرس ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے. جیسا کہ آج کھانڈے سر نے بھی اس بات پہ زور دیا کہ وہ صرف ایکسرسائزز کرا رہے ہیں, جبکہ کنسیپٹ ان میں اسٹوڈنٹس میں بلڈ نہیں ہو رہے. تو یہی وجہ ہے کہ جب ان کا بیسک میتھمیٹکس ٹھیک نہیں رہتا ہے تو وہ ہائر لیول پہ اس سے ڈرتے ہیں. جہاں پہ آپ پرائمری یا مڈل لیول پہ ہم اچھے میتھمیٹکس ٹیچر دیکھتے ہیں, وہاں سے ہمیں ریزلٹس جو ہے بہت ہی اچھے نکل آتے ہیں, اور وہاں سے اچھے میتھمیٹکس اسٹوڈنٹ نکل آتے ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے سب سے زیادہ فوکس ہمیں پرائمری اور مڈل لیول پہ ہی کرنا چاہیے, کہ جہاں سے ہمیں کنسیپٹس پہ زیادہ زور دینا چاہیے ان ایڈیشن ٹو ایکسرسائز. آپ کو لگتا ہے ایسے پروگرامز منعقد کرنے کی ضرورت ہے ایسے پروگرامز تو منعقد ڈر ختم ہو جائے؟ ہاں ایسے پروگرامز تو منعقد کرنے کی ضرورت ہے, لیکن اس سے زیادہ ضرورت ہے گورنمنٹ کے تھرو, کہ گورنمنٹ کے ذریعے سے کہ جو ہمارے اسکولز ہیں ان میں سبجیکٹ اسپیسیفک ٹیچرز ہونے چاہیے. جیسا کہ آپ کے 8th کلاس میں 7th کلاس میں کوئی ہسٹری MA ہسٹری والا یا کوئی زولوجی والا آپ کا میتھمیٹکس پڑھاتا ہے, تو وہ اس حساب سے نہیں پڑھائے گا جیسا کہ میتھمیٹکس MSc میتھمیٹکس والا وہاں پڑھائے گا.
تو مجھے لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ کو بھی اس سلسلے میں انیشیٹو لینے چاہیے اور اسپیسیفک ٹیچرس وہاں پہ ہر جگہ رکھنے چاہیے. اور ہمارے جو گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں پہ ٹیچرس کی بھی بہت زیادہ کمی ہے. پرائمری اسکولز میں 2 ٹیچرس رکھے گئے 5 کلاسز کے لیے بہت جگہوں پہ, تو وہ بھی اس میں بہت زیادہ اثر کرتا ہے. میتھمیٹکس کتنا امپورٹنٹ ہے آج کل کے دور میں؟ مجھے لگ رہا ہے کہ میتھمیٹکس کے بغیر زندگی ہے ہی نہیں. تو USA سے ایک سروے بھی نکلتی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی ذہین اور جتنے بھی اچھے انسان نکلے ان سب کا ایک ہی ریزن ہے کہ ان کا میتھمیٹکس ایز سبجیکٹ تھا. تو اگر کہیں پر بھی سروے ہو رہا ہے تو یہ تو پایا ہی جاتا ہے کہ جو لڑکے میتھمیٹکس پڑھتے ہیں وہ دنیا کو ایک اچھے رنگ سے دیکھتے ہیں, امن پسند رنگ سے دیکھتے ہیں. تو اس کے بغیر زندگی ہے ہی. تھینک یو ویری مچ. اس پروگرام کے کنوینر تھے ڈاکٹر محمد عبداللہ وانی, اور اس پروگرام میں پورے وادی کشمیر سے آئے ہوئے کشمیر میتھمیٹیکل سوسائٹی سے وابستہ اساتذہ اور ریسرچ اسکالرس نے بھی شرکت کی.